A very good morning to class 7th. Welcome to the last class of chapter Water a Precious Resource. So today we are going to finish our chapter with the completion of this topic. Okay, so the topic for today's class is how scarcity of water affects the plants. This means how the scarcity of water means पानी की कमी से plants कैसे affect करते हैं. ठीक है, you all know that for the growth of plants we require water. What if water is not available for the plants? Then in that case plants will not grow. Okay, plants grow करेंगे नहीं, तो यही ultimate effect होता है on the plants by the scarcity of water. ठीक है, पानी की कमी की वजह से. So let's discuss this topic in more detail. So children, you must have seen potted plants wilting and ultimately drying up. ठीक है, आप सबने देखा है जो हम प्लांट्स होते हैं हमारे गमले के अंदर, पॉट के अंदर, वो क्या होता है आपने देखा है, कुछ प्लांट सूख जाते हैं. ठीक है, कुछ की जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं. ठीक है, विल्टिंग मीन्स मुरझा गई हैं. ओके, और ड्राई हो जाती है, सूख जाती है. इफ दे डू डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर ए फ्यू डेज, अगर हम उन्हें पानी नहीं दें कुछ दिनों के लिए. ठीक है, so and you have also learned that plants need water to get the nutrients from the soils to prepare their food. Okay, in your chapter number 1 you have already learned about this, that plants require the nutrients. Okay, and the nutrients they get from the soil for making their food, right? So imagine the consequences if water is not available to plants. तो imagine करो अगर plants को हम पानी ना दें या plants को पानी available ही ना हो, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे. ठीक है, they cannot grow properly. Alright, so here are the points which shows the different consequences of plants if they did not get the water. Okay, so first one is the plants get dried up as they get no water and hence they can die. ठीक है, उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होंगे, मर जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो वाटर टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस. नाउ you all have studied about the photosynthesis. Okay, what is it? Photosynthesis is a process in which plants make their own food with the help of water, carbon dioxide and sun rays. ओके, ये तीन चीजें उन्हें बहुत जरूरी होती हैं अपना खाना बनाने के लिए. फर्स्ट वन इज वाटर, सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन इज सनलाइट. ठीक है, अगर इन तीनों में से भी कोई एक चीज नहीं मिलती प्लांट को तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे. ठीक है, चाहे वो वाटर नहीं मिलेगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे और क्या होंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अवेलेबल होगी उनके पास तो वो क्या करेंगे, खाना नहीं बना पाएंगे. ऐसे ही उनके पास सनलाइट नहीं अवेलेबल होगी तो वो खाना नहीं बना पाएंगे और वो मर जाएंगे. तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों ही रिक्वायर्ड है. ऐसा नहीं कि किसी एक से भी काम चल जाए. सो अगर वाटर नहीं है तो क्या होगा, the photosynthesis will not happen and hence they are not able to produce any food. All right, then comes to third point, they will not be able to grow upright because of scarce water. Upright means you know that for the growth, proper growth, okay, of the plants we requires the nutrients as well as the water. ठीक है, water भी चाहिए, nutrients भी चाहिए, but basically the most important one is the water. Why? Because if water is not available, in that case the nutrients present in the soil, okay, present in the soil will not get be absorbed by the plants through their roots. ठीक है, वो जो plants होते हैं वो nutrients कैसे absorb करते हैं, कैसे लेते हैं जब आप प्लांट्स पे पानी डालते हो. ठीक है, उसकी वजह से मिट्टी गीली हो जाती है. मिट्टी गीली हो जाती है मीन्स मिट्टी के अंदर पानी चले जाता है एंड मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट है वो कैसे लेते हैं, अपने रूट से सारे न्यूट्रिएंट्स को लेता है. ठीक है, अब प्लांट जो वाटर लेता है वो भी अपने रूट्स के थ्रू ग्राउंड से वाटर सक करता है. ठीक है, लाइक वाइज जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो भी कैसे जाते हैं, फ्रॉम द रूट्स टू द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स रूट से जाएंगे, देन स्टेम में जाएंगे, देन लीव्स में जाएंगे. तो ऐसे ऐसे करके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के अंदर एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, प्लांट्स ग्रो. Okay,
जो प्लांट्स है वो प्रॉपर ग्रो करते हैं, उनकी हाइट प्रॉपर होती है. सो इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स नो न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल टू द प्लांट्स. यस और नो? है ना, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू grow up, right? Okay, so this also affect the growth of the plant if water is not available to them. All right, then comes to next point, which is they will no longer be able to get enough nutrients from the soil because of less or no water. ठीक है, उन्हें क्या होगा, उन्हें nutrients नहीं मिलेंगे. Just I have explained you in the above point that they will not get any nutrients from the soil because of less water available to them. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो पानी भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए. देन द लास्ट पॉइंट इज एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो फूड, नो ऑक्सीजन एंड हैंस नो लाइफ विदाउट द प्लांट्स. ठीक है, तो जब उन्हें पानी अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट्स के अपना खाना नहीं बना पाएंगे, दे विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी फूड. ओके, फूड नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, देन प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे. अगर प्लांट्स ही मर गए तो from where do we get the oxygen? You all know that we get the oxygen from the plants, trees. Okay, because plants take the carbon dioxide from the atmosphere for making their food and release oxygen into the atmosphere. Okay, and that released oxygen we inhale, we human beings inhale. Okay, and through this oxygen we are survive, we are able to live our life. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम क्या जिंदा नहीं रह पाएंगे. ठीक है, तो जिंदा नहीं रह पाएंगे तो अर्थ पे कोई लाइफ नहीं रह पाएंगे. ठीक है, so it is very important to have plants on the earth. Because of plants we have on the earth, we can survive on the earth. Okay, so these are the points which you have to remember, that these are the consequence of water is not available to the plants. Okay, so after the completion of this topic, our chapter is also over. Go through the entire chapter, read the chapter again through your book. Okay, underline the doubted questions and ask to me in the live class. Okay, so that's all for today. Do the assignment, stay safe, stay at home. Thank you.